देख रहे हैं उत्तर शक्ति न्यूज। So well with such warm response. Shivani, how did the song happen? Hi everyone, thank you so much for coming here today, this afternoon, and helping us helping us support our new song Nindra. So well, Nindra is a beautiful composition. It's a very catchy, dreamy song composed by KB Music and written by Veen Raja. मेरा एक सॉन्ग आया था लक शेख कुछ महीने पहले, तो वो काफ़ी हिट हुआ था वो गाना. It's a Punjabi song. So the makers of that song, people who made that song, I really connected with their music. So I decided to fly to Chandigarh during the second lockdown. You know, Chandigarh was still open and a lot of shoots and recordings were happening there. So I spent a lot of time recording lots of lovely songs. तो उनमें से ये जो पहला गाना निकल के आया है वो है निंद्रा, and I played it to Zee Music Company. They loved it instantly and they said, okay, we are releasing it. And then of course वीडियो इतना खूबसूरती से बन के आया. It's beyond my expectations. I'm so happy with the way the video is looking, with the beautiful Kashika Kapoor, who's the heroine in the video. You see her dancing and looking gorgeous, and Abhishek Verma, who's also a very popular television actor, and directed by Aslam Khan. So yeah, it's really a huge teamwork which has come together very beautifully. And today, now that things are coming back to normal, we need the chirpiness and the bubbliness, and we need the positivity. So it's a very bright, peppy, lovely, bubbly, dreamy, catchy love song. So yeah. Actually, talking about the titles of your songs, they're always peculiar. You know, it has one lucky charm to it. What do you have to say about that? Like Nindra. Actually, मेरा एक song आया था last year, Jogia, and Jogia is a Punjabi. That was my journey with Punjabi music actually. So उस गाने के बाद, you know, I started getting a lot of offers to sing in Punjabi, and I rediscovered myself as a Punjabi singer, even though I'm a Punjabi. So ये भी गाना is like Hindi Punjabi kind of thing. And Punjabi, as you know, is a language which is doing very well in the mainstream music circuit now. I mean, Punjabi is really up there, and it comes to me naturally because I'm a Punjabi. So Nindra basically means need. So that's the meaning of Nindra. Kashika, how is your experience? Video looking lovely, such cute locations, you know, in the entire video. So what was your experience? And obviously, you know, with Shivani playback, playback for the song. What do you have to say? Firstly, thank you so much. I want to thank Aslam sir for believing in me. I want to thank Parul ma'am, and I want to thank Shivani for hosting this for us. So it's been a lovely journey, and I love the entire crew. I think Abhishek has put in his hard work completely. The colors used on set, there were so many bright colors and so much of that positive vibe which has actually been seen now in the video. You can see it. The yellow car. The yellow car and everything. I think that whole scene where, you know, the whole glasses are off and I made them, it just felt so good doing it, and it's all been portrayed now. So people are really, really liking it, and they're making a lot of reels, so continue to do that. But I genuinely want to thank Aslam sir and Zee Music Company for believing in me and believing in me being their protagonist for Nindra. So thank you so much. Actually, one day before I got to know that it has a dance number to it. And I was like, shit, really? I thought I was only acting. And they were like, no, there's a dance footstep. So they called us to train, and we had a good, like, only I think 30 minutes to train. And that is it. Next day I was shooting for another project. So I was just like, you know, ek din bhi nahi milne wala practice ke liye, rehearsals ke liye. So there was no time left. It was only 30 minutes given for the Nindra hook step, which you guys have seen and loved. So yeah, it's come out really good, and Shivani's voice has obviously done the entire magic. She's really killed it, and the entire thing, the way you listen to Nindra, the way the tone changes also, you know, the part of the tone changing is a very difficult thing to do. But she as a singer has done it, and it's really incredible, so thank you so much. It's come out beautiful, yeah. So thank you so much, Kashika. You actually added the glamour and the beauty to the song, and I'm really happy, and it's very youthful. The song is very, very youthful, and I'm loving it. I think all the college people will love it. Yeah, even parties and even, you know, clubbing events. I think it'll really work there. I think the song has a, you know, driving element also. You can use it while driving or even while clubbing. Yeah. Shivani, you must hear, we see a guitar like right next to you. So we have to hear the song before we move. So I'm going to sing, and Kashika will do the step. She tried to teach me the step. I'm trying to learn it because tomorrow we're shooting reels with a lot of creators. So yeah, it's I will be training with her. She'll be teaching me the step.
आके सताता है तू वादा से हाल में ख्वाबों में आता है तू आके सताता है तू तुझको बताऊं कैसे हाल में की करा दस की करा दिल मेरे बिन लगे नानी की करा दस की करा दिल मेरे बिन लगे नानी की करा नींदरा मेरी नींदरा वे तू सोनिया चुराया मेरी नींदरा नींदरा मेरी नींदरा वे तू सोनिया चुराया मेरी नींदरा। काफी हिट रहे हैं, निद्रा भी आनी है, पंजाबी गाने हैं। जी 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 तो इस तरह गाना कितना कैची होता है और पार्टी वेयर में गाते हैं गाना, कितना बजता है ये गाना है? नींद्रा में एक अपने आप में एक ना बहुत एक जैसे कहते हैं बहुत ही सपनों वाली ड्रीमी फील होती है। तो हमेशा पीपल लाइक टू एस्केप इनटू फैंटेसी। तो जब आप सो जाते हैं तो आप फैंटेसी लैंड में चले जाते हैं, आप ड्रीम करते हैं। तो आपके ख्वाब और ये सब पूरे गाने में जो लफ्ज़ आप सुन रहे हैं, ख्वाबों में आता है तू मुझको सताता है तू तुझको बताऊं कैसे हाल में। सो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ख्वाब, नींद, फैंटेसी लैंड, आई थिंक इट्स समथिंग विच वी ऑल वांट टू एस्केप इनटू। जब हम फिल्में भी देखने जाते हैं थिएटर में तो यू नो वी लाइक टू एस्केप इनटू अनदर वर्ल्ड, ट्रांसपोर्ट टू अनदर वर्ल्ड एंड अपनी जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से थोड़ा सा हम कट ऑफ होके एक दूसरे वर्ल्ड में जाना चाहते हैं। सो दैट्स व्हाट दिस सॉन्ग टेक्स यू इनटू अनदर वर्ल्ड। कैसा एक्सपीरियंस रहा कपल फिल्म आपके पास? It was a beautiful experience. जब हम सेट पे गए, it was really bright and I've loved the set also. It was shot at Edge City. बहुत ही अच्छा set है, बहुत colourful है. We have a lot of things there and there was also this the entire path that we had a couple of stores on the left, on the right. There was a proper director's set given. So it's a beautiful place, a beautiful studio to shoot at. And I've enjoyed shooting for this. We shot for hours and hours. We shot the entire time, but it was all worth it. All of the dancers also with us. It was choreographed by Sushma ma'am, so I really want to thank her. And all of the dancers were amazing. They even helped in the choreography. So it was really, everything was done last minute. The whole part where Abhishek is moving me, putting me down, and so yeah, there was this part where the choreographer told us that do this, and Abhishek and I were like, no, we'll do it our way. And then Aslam was like, yeah, I love it this way, just stick to it. So we had a lot of chemistry. We bonded a lot. A lot of people have loved the chemistry. They've been like, you all should really do more work together. And I also felt that, Abhishek and I have made a good pair. So also we both are Punjabis, so we got that Punjabi vibe. कितना प्राउड फील करते हैं आपके शिवानी जी के गाने का हिस्सा बने? I'm really overwhelmed and I'm very happy. शिवानी की आवाज़ में ना इतना जादू है, मैं बोलूँ क्या? She's really, seriously, because her voice, when the colors are moving and when Neendra is happening, it's the voice that's making us move. Without that voice, there would be no Neendra, there would be no hook step. It's all because of Shivani's lovely voice, and her presence now has made it complete because that little part was remaining. So yeah, I'm really happy. शिवानी जी एक के बाद एक गाने आपके आ रहे हैं, पीछे भी कोई लॉन्च हुआ गाना आपका, काफी इतनी एनर्जी कहाँ से आती है आपको? आई थिंक 2 साल हम लोग सब बैठे रहते घर में कोविड की वजह से, तो उसके बाद एनर्जी इतनी आ गई कि अब हम नॉन स्टॉप काम कर सकते हैं। नाउ वी आर ऑल रेडी टू गो। मतलब आजकल मैं बैक टू बैक शोज कर रही हूँ लिटरली यही फ्लाइंग सॉस है जहाँ पे आज हम बैठे हैं। मेरा परसों यहाँ पे बहुत बड़ा परफॉर्मेंस है, तो आप लोग से सब प्लीज़ आइएगा, प्लीज़ कम एंड एंजॉय एंड मूव टू my songs and to Neendra live and unplugged for the very first time. Kashika will also be coming once again. Yes. Thanks also. गुनगुनाएंगे आप गाना थोड़ा दोनों मिलके? ख्वाबों में आता है तू, आके सताता है तू, तुझको बताऊं कैसे हाल में। ख्वाबों में आता है तू, आके सताता है तू, तुझको बताऊं कैसे हाल में। की करा दिल तेरे बिन लगता नहीं की करा दस की करा दिल तेरे बिन लगता नहीं की करा। एवरीबॉडी नींदरा मेरी नींदरा वे तू सोने चुराया मेरी नींदरा
किन आंसू में छिपी रहती है, मतलब एक So it comes out in a very dignified manner. सो मैम कितनी एक्साइटेड रहती हो आप पब्लिक के रिस्पांस को लेकर, और पब्लिक से मिलने वाली रिस्पांस को लेकर कितना एक्साइटेड हो आप? एक्चुअली पब्लिक ही तो है जिसकी वजह से मैं आज 20 साल तक आपके सामने अभी तक यही हूँ, और आप मीडिया लोग हैं जो हमको बनाए रखते हैं. सो पब्लिक एंड द मीडिया इज़ मेरे लिए बहुत ही अहम है, बिकॉज उन्हीं का प्यार, उन्हीं का सपोर्ट, उनकी फॉलो की वजह से वी आर ऑलवेज, हम जितनी मर्जी मार्केटिंग कर लें, ये कर लें, वो कर लें, बट जब तक पब्लिक हमको नहीं प्यार करेगी, हमारे काम को, म्यूजिक को प्यार नहीं करेगी, तो हम करेंगे. सो पब्लिक इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड I always like to, that's why I love to do my live shows, and I'm so glad कि live shows are back now. So live shows में public के साथ एकदम Interaction होता है. instant interaction होता है, और उनसे एक instant feedback भी मिल जाता है. थैंक यू मैम. Thank you. And दुबई एक्सपो की ग्रैंड फिनाले में मैंने परफॉर्म किया. That's a great matter of pride for me, because मैं इंडिया को represent कर रही थी इन द इंडिया पवेलियन इन दुबई एक्सपो. So और अब प्लान ये है कि अभी तो जी म्यूज़िक के साथ ही मेरा एक और सॉन्ग आ रहा है, आइस जो है, वो भी पंजाबी हिंदी वाला जॉनर है. वो बहुत ही लटीनो स्पेस में बना है गाना, बहुत लटीनो स्पेनिश म्यूज़िक टाइप का हमने उसका दिया है, बट अगेन इट्स हिंदी पंजाबी एंड इट्स वेरी नाइस मेलोडी. सो दैट्स नेक्स्ट सॉन्ग टू लुक आउट फॉर. बट ऑफ कोर्स मेरा यही है, आई एम ऑल्सो डूइंग अ सॉन्ग फॉर पंकज Parashar जी's next web series that he's working on, so I'm singing for him. So I'm looking at doing more and more content now, and backing it up with my live shows. आने आपका लुक काफी चेंज है, क्या आप ये अगले गाने में आने वाले हैं क्या एक्टिंग में? अभी मुझे कुछ पता नहीं सी what happens, जैसे अभी आपने मुझे मेरे महबूब में देखा, मैं इट वाज जस्ट मी, बिकॉज गाना जो था वो लोनलीनेस के बारे में था, एंड इट वाज डिपिक्टिंग, जैसे आपको सबको पता ही कि मेरे महबूब एक बहुत ही लव सॉन्ग है विच इज़ अबाउट अनरिक्वाइटेड वन साइडेड लव. तो मैं अरुणाचल प्रदेश में थी उस समय, मेरा एक शो था वहाँ पे, तो आई डिसाइड टू शूट द सॉन्ग है, एंड मैंने अरुणाचल प्रदेश की टूरिज्म के साथ टाई अप किया कि वी विल प्रमोट द टूरिज्म थ्रू दिस म्यूजिक वीडियो. सो कुछ ऐसे सॉन्ग्स में मैं आ जाती हूँ, कुछ ऐसे सॉन्ग्स में जहाँ पे बहुत डांसिंग और एक्टिंग की जरूरत पड़ती है, तो हम ऐसे बढ़िया एक्टर्स को लेते हैं फिर, ताकि हमारे गाने गाने को और चार लग जाए. सो No, but you should feature. आई फील There should be one there. Thank you. Also, like. क्या होपफुली.